वेलकम बैक टू मार्केट पल्स। जैसे कि आपको पता है कि मुस्तफा और पाशा साहब सीनियर एसोसिएट ऑफ बीएमए कैपिटल मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा साहब, जिस तरह आपने भी बातें सुनी कि हमारे साथ अभी एनआईबी बैंक के प्रेसिडेंट और सीईओ मौजूद है फोन पे, क्या कमेंट करेंगे ऑन एनआईबी बैंक्स रिजल्ट्स? वेल, इट्स इनकरेजिंग कि इन्होंने अपना इम्पेयरमेंट चार्ज डायरेक्टली ले लिया है 1 बिलियन। आई थिंक बेसिकली जो बैंक्स का जो भी स्ट्रेटजी है, इन पर्टिकुलर एनआईबी के हम देख रहे हैं, बेसिकली टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द बैंक के जो डाउन साइड पे जो अनसर्टेनिटी है उसको मिनिमाइज करने की एफर्ट्स आर अंडर वे. So basically, if the bank, like we've seen in previously, the couple of the big banks like MCB and Habib Bank have declared the results. MCB chose to take half of it into their impairment loss. So I mean, I think bank की strategy यही है कि basically जो confidence shake हो गया financial sector की solvency पे, basically start to reverse that, show people कि we're a transparent sector and we will continue to minimize risk on the downside. So I think in that way it's a very positive move. बट व्हेन बैंकिंग सेक्टर पे अगर इन पर्टिकुलरली बात करें ऑन द एडीआर, एडवांसेस एंड डिपॉजिट रेशियो, एनआईबी बैंक का 57.4% है, जिसमें का कहना है, क्लेम है कि एनआईबी इज हाईली लिक्विड विद इट्स एडीआर। कंपेयरिंग विद द बैंकिंग सेक्टर, क्या इसके अब फिगर्स में कितना आपको नजर आता है कि यस आर दे लिक्विड, या फिर अभी भी उनको और स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर कि अपना जो रिस्क मैनेजमेंट और बेसिल 2 के अकॉर्डिंग जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो भी जो 19.5% है वो भी इज सफिशिएंट टू द मार्क फॉर द टाइम बीइंग? Well, for the time being, I think comparatively they're quite liquid. The banking sector ADR ratio is lying around 80% this time. So the 23% spread between NIB and the rest of the banking sector is quite significant. Going forward, State Bank की directive भी है कि जो banking sector overall अपना ADR ratio 70% तक लेके आए. So this will basically involve डिपॉजिट मोबिलाइजेशन. इसलिए अगर आप देख रहे हैं स्टेट बैंक में आपने अभी बात करी थी कि दे इशूड अ डायरेक्टिव करंट रेशियो के हिसाब से. दिस इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो है इज डाउन बाय 50%. क्योंकि बैंक्स जो अब अपनी लिक्विडिटी है वो टी बिल्स में पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं. एज यू सीन कि द लास्ट फ्यू टी बिल ऑक्शंस हैव सीन वेरी हैवी पार्टिसिपेशन, स्पेशली इन द 12-month tenors. So basically this is an effort by the state bank to restore lending to the private sector कि भाई आपका current ratio now अब आपका जो 1 पे था, अब now you can relax that and determine it by yourself कि who you think is solvent borrower or not. So obviously what the state bank is looking for is first of all to promote advances to the private sector, which is a automatic or one of the main indicators we will look at if we are going to forecast or predict कि economic growth or economic recovery कितनी जल्दी आती है. Secondly, the state bank to bring the 70% ADR ratio in line, the banks will have to have heavy deposit mobilization in the coming. So if we're looking at an interest rate cut, if we're looking at a deposit mobilization, so the spreads that banks have seen, in fact you've seen record spreads this past month of 7.8%, those will probably start to narrow. And going forward you'll probably start to see as their NPLs जो convert होते हैं अभी doubtful or substandard में हैं. They have 3 categories of NPLs: doubtful, substandard and loss. As those are matured or as those convert to the more stringent categories, banking provisioning will probably increase. लेकिन अब इसी हवाले से हम बैंकिंग सेक्टर पर और भी बात करेंगे, बट आइए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें सेजल पटेल भी ज्वाइन करेंगी फ्रॉम सिंगापुर